So first of all, today we're going to start the topic, which is software development life cycle. The first topic which we are going to study is today software development life cycle. Okay, so what exactly does software development models, or we can say, or the life cycle, which are usually used to prepare the software and in the industry, what we can say. Okay, so basically the question which asks in the interview is like, what process do you follow, you have used, or you are following in your projects? Okay, so this question we can say, this question is frequently asked by the many of the interviewers while interviewing to the candidates. Okay, so what is that question? The question is, what process you have used to develop your project? Okay, so these all modules are comes under software development models. Okay, so in which we have the different models as we follow. Okay, so in software development field, we usually used to follow the different modules. Okay, so what modules exactly we follow? In that we are following the waterfall module, spiral module, V module, fish module, and agile process, we can say. Okay, so all these type modules we are following in software development or in IT sector to develop the any particular software. Okay, so exactly what is this process, why we have to follow this process, we thoroughly going to see in each and every video which I'll going to post it. Okay, so today our basic agenda is to learn what is waterfall module. We have to learn what is waterfall module and what is the exact use of waterfall module in our software industry or in software development. Okay, so first of all, as I have told, there are the n number of different modules which are followed, in which I am again repeating it. We have waterfall module, spiral module, V module, fish module, and agile process. Okay, in first video we usually used to learn what is waterfall module. Okay, so secondly, so exact what is waterfall module, we can say. So waterfall module is nothing but it was the initial process for model to introduce for software development. Means this is, we can say, the version 1. What we can say as a version 1 of the software development. Okay, so this module can be used for the version 1. We can say it was the initial process or the model introduced for the software development. We can also call it as and the old process. See, nowadays no one is using the waterfall module. Every company, every organization is using the agile process only. Okay, but as also we are following the agile process is important, we all know that, but the what is waterfall module, we also know that, because this is version 1, we can say, which have been used for what we can say for the development perspective. Okay, so exact what is waterfall module we're going to see. As we know, like waterfall module is an initial process or the initial step, we can say. It was introduced for the development of, it was introduced for the software development, or we can say as an the old process. So basically this waterfall modules follows the sequential execution of all the phases in the SDLC. Okay, what we can say as an the sequential process is nothing but and the step-by-step format of the execution. What we can say, what is sequential process? Sequential process को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि sequential form. Sequence in the sense one after another. One after another. What one after another we have to use? One after another is nothing but the steps which involved in the SDLC. Okay. So now what are the different steps are involved in the SDLC? SDLC में हम क्या बोल सकते हैं कि like कौन से different steps है that we are following. So different steps is nothing but we have and the information gathering, we have analysis, design, coding, testing, and support and maintenance, what we can say, right? These all steps are involved in the SDLC, is known as the waterfall module, we can say. So execution of the step one after another. Let's suppose if we have done information gathering, then after that we have analysis step, we can say. We have analysis step, after that we have design step, then we have
coding or the development stage, we can say. Then we have testing stage, and then we have support and the maintenance steps. Okay, as I have told, this is the sequential execution. So what is sequential execution? Sequential execution is nothing but one after another. What we can say, one after another we can say. मतलब जब एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जब हम सेकेंड स्टेप के लिए proceed करते हैं, right? That is nothing but is called as sequential execution. So what is the main role we can say in the waterfall module is nothing but and the sequential execution. What is sequential execution? I'm repeating once more. So sequential execution is nothing but, we can say, the execution of the step one after another. Execution of the step one after another. Okay, so we can also known as the old process. Waterfall module is also known as the old process. So basically, as we know, why the name of waterfall module has came, because see, we all know that, we all have seen what is waterfall. Waterfall is nothing but water falls under the step-by-step point of view, we can say. Means step-by-step in the sense, water fall from highest point to the lowest point, we can say, right? Means we can say that the step-by-step manner. Okay, how water falls in the step-by-step manner. Step-by-step manner in the sense, it is following the steps. It has to follow some of the particular steps. हम क्या बोल सकते हैं कि ये particular एक sequence follow करता है, कि एक particular steps follow करता है. So that's why this name is known as the waterfall module, we can say. Okay, and what we can say as the waterfall, once the phase is completed, high level management will analyze the phase. So what is high level management? Once we can say as the waterfall module, or these steps has been completed. Steps has been completed in the sense, like हम बोल सकते हैं जैसे बीए ने इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया, बराबर. इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद उसने एसआरएस डॉक्यूमेंट या एनालिसिस किया, राइट. उसके बाद में डिजाइन फेस किया, जो डिजाइनर है, जो आर्किटेक्ट है, जिन्होंने डिजाइन कंप्लीट किया. उसके बाद में डेवलपमेंट हुआ, डेवलपर्स ने डेवलपमेंट किया, टेस्टर्स लोगों ने टेस्टिंग किया. देन वी हैव द सपोर्ट एंड सपोर्ट स्टेप, वी कैन से, राइट. वंस आफ्टर वाटरफॉल मॉड्यूल हैज कंप्लीटेड, और हम लोगों ने जो वाटरफॉल मॉड्यूल इंप्लीमेंट किया है हमारे एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, राइट, वो जब कंप्लीट होता है, देन हाई लेवल मैनेजमेंट इन दैट वी कैन से एज एन आवर क्लाइंट और आवर scrum master, or we can say as an our manager, they usually used to analyze this whole process. Means this whole process or the module, we can say is likewise what you have implemented, means what our team has implemented it. They usually used to do the analyze, we can say analyze in the sense, they usually used to do the review point of thing. Okay, so then we can say, and then here is a note, we can say the how water falls from one level to another. जैसे मैंने आपको बोला कि like जैसे वन स्टेप आफ्टर अनदर, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ही हम सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन भी कहते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई हाउ वाटर फॉल्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इन द सेम वे ऑफ द फेजेस ऑफ द एसडीएलसी विल बी इम्प्लीमेंटेड. इसके जो फेजेस होने वाले हैं वो फेजेस सेम ही होंगे एसडीएलसी के फॉर्म में. जैसे मैंने बताया कि वी हैव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड सपोर्ट एंड मेंटेनेंस. ये फेजेस सेम ही है, जस्ट सिर्फ इसका जो एग्जीक्यूशन है वो सिक्वेंशियल मैनर में है, राइट. सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द एडवांटेजेस, ओके, व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द एग्जैक्ट एडवांटेजेस ऑफ द वाटरफॉल मॉड्यूल. सो एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉड्यूल, वी कैन से इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट. वाटरफॉल मॉड्यूल जो कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो प्रोजेक्ट के लिए हमें जो इम्प्लीमेंट करना है वाटरफॉल मॉड्यूल, ओके, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट इन द सेंस, व्हाट वी कैन से, जो एक सिस्टम रहता है, बराबर, वो सिस्टम में वो इजीली फिट हो जाता है. ओके, द प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन. सी, इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं इंप्लीमेंट करने के लिए. इट इज जस्ट व्हाट वी कैन से एंड द सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन. जैसे वन आफ्टर अनदर जो स्टेप्स है, वो स्टेप्स हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, but as I have told in the starting of the video, why waterfall module is and the old process and why the industry has rejected it, because it has some of the disadvantages. Okay, because it has some disadvantages. What is the disadvantages? Now I will tell you. Okay, so basically
The disadvantages of waterfall module is likewise the risks can't be identified at the early stage the life cycle, so it can't be prevented. Okay, let's suppose जो risks होता है, risks in the sense, let's suppose we can I can explain you with the example in information gathering stage, okay, or in analysis stage. Okay, जैसे BA ने what we can say BA or the business analyst who used to collect the information from the client, जिन्होंने client से information collect किया, उन्होंने एक BRS document बनाया. Okay, BRS document बनाया. Let's suppose there is some understanding gap between the client and the BA. Client has told some different thing and BA has analyzed some of the different thing. Okay, so as per the client which has told the requirements to the BA has prepared each document, that is the thing what's called as the BRS document. From this BRS document उन्होंने SRS document भी बना लिया. Okay, but it has evolved a sum of the risks. Okay, it has evolved the sum of the risks, so risks can't be identified. Let's suppose what we can say, so एक रिव्यू कॉल हुआ, उसमें समझा कि BA ने लाइक अंडरस्टैंडिंग या फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग लेने में या रिक्वायरमेंट्स लेने में कुछ थोड़ी बहुत गलती हो गई, राइट. अगर ये स्टेज अपन को एनालिसिस या SRS डॉक्यूमेंट में समझ में आया, राइट, कि जो रिक्स हुआ, मतलब रिक्स इन द सेंस व्हाट वी कैन से रिक्स कांट बी आइडेंटिफाइड एट द अर्ली स्टेज, जो उसमें वहां पे रिक्स हुआ. सो फिर अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बराबर, सो आगे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, टेस्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लाइकवाइज. बट ये जो रिक्स हुआ या जो गलती हुआ अपन जो बोल सकते, राइट, ये अपन आइडेंटिफाइड इन अर्ली स्टेज. द रिक्स कांट बी आइडेंटिफाइड, जो रिक्स है वो अपन आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते इन द अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. ओके, इन अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, सो इट कांट बी प्रिवेंटेड. वो जो गलती हुआ वो अपन प्रिवेंट नहीं कर सकते, राइट. सो जो कुछ अभी इसमें रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में या कुछ प्रॉब्लम हुआ वो अपन एंड ऑफ द साइकिल ही उसको फिर चेंज कर सकते. जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एक बार लॉक हो चुके हैं उसको हम आगे वापस ये नहीं कर सकते, राइट. एंड दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. As I have told you कि ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है, बराबर. As it is step by step, let's suppose take an example we can say, जब तक इंफॉर्मेशन गैदरिंग आता नहीं तब तक ये जो नीचे वाले जो बंदे हैं कि जो काम कर रहे हैं, जैसे कि कोडिंग हो गया, मतलब जो डेवलपर्स हुए, जो टेस्टिंग फेज में जो टेस्टर्स काम करने वाले, जो डिजाइनर्स है कि जो हम फ्रंट एंड या UI डेवलपर बोल सकते हैं, तब तक वो UI डेवलप नहीं कर सकते, राइट. बैक एंड डेवलपर्स वो कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, टेस्टिंग. सो बेसिकली व्हाट वी कैन से इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. जब तक रिक्वायरमेंट्स आएंगे नहीं, जब तक BA SRS डॉक्यूमेंट बनाएंगे नहीं, तब तक आगे का काम कुछ स्टार्ट ही नहीं हो सकता बेसिकली, राइट. सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड एज वेल एज कॉस्टलियर, बिकॉज यू नो दैट this all comes with a resource, and as we are planning for the resource, so resource is also comes with the cost. We have to pay some of the cost, so that's why we have told it is an costlier process, we can say, right. We can't escape the requirement change in the middle of the project. Let's suppose कि client has given us the X requirement. Okay, now क्लाइंट वांट, अभी जो क्लाइंट है, जो BA को उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स दिए थे वो एक X रिक्वायरमेंट दिए थे पहले. अभी क्लाइंट क्या बोल रहे हैं कि वी वांट चेंजेस. सो वो कौन से चेंजेस है, वो बोल रहे कि वो Y चेंजेस बता रहे हमको, राइट. कि जो ये Y चेंजेस है, अगर ये Y चेंजेस से पूरा प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन की जो फ्लो है वो ही चेंज हो रहा है, तो वो जो क्लाइंट रिक्वेस्ट है या चेंज रिक्वेस्ट है, हम जो बोल सकते हैं CR उसको बोलते हैं, राइट, वो हम एस्केप नहीं कर सकते इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट वी कैन से. ओके, इफ स्टिल नीडेड टू एस्केप देम, और अगर तभी भी क्लाइंट बोलते हैं कि लाइक yes, we want that change to be implemented in the project. Change in the form of, जैसे मैंने बोला कि जो requirements होते हैं, कि जो change request होता है वो in the forms of CRs होते हैं. Change request are done at the end of the project. जो change request है वो end of the project में ही ले सकते हैं, and the CRs changed by the company, and the CRs which is changed by the company, what we can say. जैसे मैंने बताया कि जो client ने पहले X रिक्वायरमेंट दिए थे, अगर वही रिक्वायरमेंट उन्होंने वापस, मतलब एक पहले X रिक्वायरमेंट दिया, नाउ दे आर सेइंग वी हैव टू इंप्लीमेंट द Y रिक्वायरमेंट. ओके, सो ये जो Y रिक्वायरमेंट्स है
हम जो बोलते हैं उसको बराबर, उसको एज अ फॉर्म ऑफ सीआर, वो हम मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं ले सकते, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट बेसिकली, राइट। एंड इस डिप्लॉयमेंट टाइम पीरियड इज द 3 months। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट हाउ मच टाइम? सो डिलीवरी डिप्लॉयमेंट वी कैन से इट एज एट दी 3 months। सो जो वाटरफॉल मॉड्यूल है, वाटरफॉल मॉड्यूल में जो कुछ टाइम हम लेते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट इन द सेंस वो जो पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है या जो कुछ है वो लाइव जाने के लिए जो टाइमिंग्स लगते हैं वो बेसिकली टोटल होते हैं 3 months। ओके, सो लेट्स समराइज इन short words what is waterfall module. Waterfall module is nothing but it is one of the process, okay, which is used for the software development, okay. And secondly, waterfall module is nothing but we can say as and the sequential execution of all the phases। waterfall module जो है वो sequential execution phases है, वो sequentially execute करता है phases। which phases? The phases of the SDLC। and what phases are involved in SDLC? We have information gathering, analysis, design, coding, testing and support and maintenance। okay, so how waterfalls one after another level, मतलब जो waterfall होता है, हम लोगों ने जो waterfall देखा है वो कैसा execute होता है, वो उसका flow कैसा होता है, one level to another level, मतलब उसका जो flow है एक level से another level तक होता है, right। so this is same phases of the SDLC will be implemented। ये जो same phases है वही हम implement करते हैं, right। so what are the advantages? so जो कौन सा भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने का जो कुछ है वो इंप्लीमेंट जो करते हैं वो इजी है। मींस ये जो प्रोसेस है वाटरफॉल मॉड्यूल का जो प्रोसेस है वो हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज व्हाई इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ एंड द सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, राइट। व्हाट वी कैन से अबाउट द डिसएडवांटेजेस? दिस मॉड्यूल्स कम्स विद द मेनी डिसएडवांटेजेस सच एज, जैसे हमने बोला कि इट इज रिस्की, कि एक पर्टिकुलर स्टेज में हमको समझा कि ये चेंज करना है, राइट। कि जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है इट कांट बी आइडेंटिफाइड एट द अर्ली स्टेज। वो जब डेप्थ में जाते हैं, काम स्टार्ट होता है, देन वी कम टू नो दैट द रिस्क इन्वॉल्व इट कांट बी आइडेंटिफाइड इन द अर्ली स्टेज, सो इट कांट बी प्रिवेंटेड। जो रिस्क है वो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। सेकेंडली, एज आई हैव टोल्ड, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट ऑलवेज कम्स विद द कॉस्ट। मतलब जो ये प्रोसेस है वो बेसिकली इट इज, ये इंप्लीमेंट करने के बाद ये इजी है इंप्लीमेंटेशन के लिए, बट इट ऑल्सो कम्स विद द कॉस्ट। ओके, सो एंड अनदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लाइंट के जो चेंज रिक्वेस्ट होते हैं या सीआरस बोलते हैं हम उसको, राइट, वो हम एस्केप नहीं कर सकते इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट या मिडल ऑफ दिस मॉड्यूल। जो कुछ सीआर रहते हैं वो अगर हमको इंप्लीमेंट करना है वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट एज वी हैव टोल्ड। ओके, सो सीआरस हम एस्केप नहीं कर सकते। सेकेंडली, कि जो डिप्लॉयमेंट टाइम पीरियड होता है, ये डिप्लॉयमेंट टाइम पीरियड जो होता है बेसिकली वो होता है 3 months। जो डिप्लॉयमेंट टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली होता है 3 months। ओके, सो इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, सो this is nothing but we can say as and the brief introduction about the waterfall module. Hope so you like this video. In upcoming videos I will explain the rest of the modules, how it is working and how it is used for developing the software development. So if you like this video, do subscribe our YouTube channel, and if you have some suggestions, so I'm open to take it, so that's not an issue. So thanks for watching this video, and